अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग बच्चों के लिए फिर से एक स्पेशल आइटम बना रहे हैं, पनीर बटर मसाला, वो भी नवाब्स किचन के स्टाइल में। चलिए देखते हैं आसानी से हम लोग कैसे बनाते हैं। आज हम लोग पनीर बटर मसाला बना रहे हैं। उसके लिए पहले हम लोग बाउल गर्म होते हैं, उसमें बटर डालेंगे। बटर अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। इसमें हम लोग सिनेमन, कार्डमम और क्लोव्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चॉप्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस ब्राउनिश शेड में टर्न होते ही हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। स्पाइसीनेस के लिए इसमें हम लोग स्लाइस्ड ग्रीन चिली भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चॉप्ड टमाटोस। इसी में ही हम लोग सॉल्ट भी ऐड करेंगे। टमाटोस और ऑनियन अच्छी तरह बॉईल हो गया है। इसको हम लोग पेस्ट करेंगे।
सारे मसाले पेस्ट करे बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। एज यूजुअल पहले हम लोग बटर ऐड करेंगे। इसी बटर में हम लोग स्लाइस्ड ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे। और थोड़ा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। जो पहले ही हम लोग ग्राइंड करके रखे थे उसको इसमें ऐड करेंगे। अब इसको हम लोग और थोड़ा स्पाइसीनेस ऐड करने के लिए रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। रेड चिल्ली पाउडर ऐड करते ही हम लोग इमीडिएटली कटा हुआ पनीर इसमें ऐड करेंगे। इसका टेस्ट और भी डबल करने के लिए हम लोग थोड़े स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा शुगर भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी। रेसिपी परफेक्टली बन गया है। इसको हम लोग बाजू रख के मिल्क क्रीम ऐड करेंगे। फाइनली इसमें हम लोग मिल्क क्रीम ऐड करेंगे। माशाल्लाह रेसिपी परफेक्टली बन गया है। इसको हम लोग रोटी के साथ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको आज का वीडियो कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और जो भी हमसे बात करना चाहते हैं या इन बच्चों तक कुछ ना कुछ पहुंचाना चाहते हैं 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए, हम आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए नवाब्स किचन टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।